Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. In this video, we are going to discuss another important topic under ARD Simplified Series, and the topic is important soil properties, right? So students, we know soil and water conservation chapter is very important for your exam point of view. Every year you will see in your phase 1 there are at least 4 to 5 questions from this particular topic, right? So you have observed that I have covered so many different topics from this particular chapter, right? Previously बहुत सारे मैंने topics already cover कर दिए हैं soil chapter से, and all these topics are very important. क्यों? Again previous year question पूछे गए हैं in particular topic से. So first in this video also I am going to tell you what are the PYQs from this topic, ठीक है? Then we'll discuss about different important soil properties, and then we'll try to solve these previous year questions from the concept that we will learn in this particular video, right? Chalo. So with that, let's start. And if you're new to our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel. And if you want to download the PDF of these lectures, you can download it from our Telegram channel. So with that, let's start and first see what are the different previous year questions that was asked there from this particular topic. So first question is, which of the following soil has best water retention? ठीक है, this was the first question. Question कहाँ पूछा गया था? NABARD Grade A Phase 1 2020 examination में. Next question, what is the name of proportion of soil occupied by air and water? This question was asked to you in NABARD Grade A Phase 1 2021 examination, right? Another question from NABARD Grade A Phase 2 2022 examination, which is, which soil have the appropriate amount of fine sand, silt, organic matter and moderate water retention capacity. ठीक है. Next question, which of the following soil type has least particle density? Question was asked to you in NABARD Grade A Phase 1 2023 examination. So now all these questions are from the soil properties, right? And we'll understand here today what are the different important soil properties. So what kind of properties we are going to discuss? First, we are going to understand soil pore space, soil structure, soil texture, then soil bulk density and soil particle density. ठीक है, तो ये सारी हमने properties जो है soil की we will be discussing in this video. Now पहले discuss कर लेते हैं कि why it is important to learn or to discuss or to know about these properties of soil. Again, soil is very important for plant, right? Soil से plant is absorbing water, plant is absorbing nutrient, right? So it's very important for us to know what are the different properties of soil, okay, so that we can understand in better way कि किस soil की water retention capacity अच्छी है, किस soil की water retention capacity कम है और वो क्यों है, right? As well as nutrient holding capacity किस में ज़्यादा है, किस में कम है और वो किस वजह से, right? So to understand all these things, we have to understand different soil properties. Now, the most important one that we have to understand are these one, ठीक है, and let's understand them one by one. So पहले we'll discuss about soil pore space. ठीक है, पहले ये देख लेते soil pore space है क्या. So students, soil pore space is nothing, is just a space between soil particle. ठीक है, we have soil particles. Now these soil particles are found in they are packed together, but still they will have some kind of space in between, right? So these are this is called soil pore space, and we call it soil porosity. Okay, we call it soil porosity. Clear? So soil porosity is what? It is the amount of space present between soil particle, right? Now students, this soil porosity is is useful, or more the soil will have porosity, there will be more space for air to go inside the soil as well as water to go inside the soil, right? जितना ज़्यादा pore space होगा उतना ज़्यादा ही space होगा air के लिए as well as water के लिए to enter into the soil, right? Now let's take three situations. So first we have non-porous soil, which is a non-permeable also. Non-porous means ऐसी soil where we do not have any kind of pore space, ठीक है, ऐसी soil जहाँ पे pore space बिल्कुल zero है, means कोई there is no space between the soil particle. So what will happen in this particular type of soil? There will be no water flow, there will be no air flow, ठीक है, ना air pass होगी ना water pass होगी, and there will be no crop growth also, because यहाँ पे root will not be able to grow itself, right? एक तो पानी नहीं है, दूसरा space नहीं है to spread the roots, right? तो this particular type of soil, again these are very compacted soil. जब हमारी soil बहुत ज़्यादा compact हो जाती है, वहाँ पे
pore space खत्म हो जाता है, and the soil become non-permeable, means it do not allow any kind of water to flow inside it or air to go to inside the soil, right? So this is again non-porous soil where porosity is zero, right? Then we have porous non-permeable. Again, there can be soil where we have porosity, but these pores are not connected together, right? Like you can see here in this particular situation, there are space, but these space are not connected, right? They are found in between soil, but they are not connected. You can see again, this type of soil will also be non-permeable, right? Because in order to have the flow of water or air inside the soil, the pores should be connected. Like you can see, all these pores are connected, okay? And such soil will be porous and permeable, and such soil will be good for your crop growth and development. Okay? Now students, here you have to just understand what is soil porosity. Soil porosity is just the air space or the water space which is found in soil, right? It is the space between soil particle where water and air enter into the soil. And again, it is very, very important that our soil have good amount of porosity, because on that only what will be the amount of water that will enter into the soil will depend, as well as amount of air that will enter into the soil will depend, right? So this is the first property, which is soil porosity, and it's very important for your root growth and development of plant, right? Chalo, next property we have is soil texture. अब texture क्या होता है, right? So you might have observed some soil are very porous in nature, right? जैसे आपने sand देखी होगी, sand is very porous, very dry, right? Some soil are very clay in nature, means बहुत ही चिपचिपी होती है, right? अगर आपको उसमें अब आप उसमें पानी ऐड कर दोगे तो बहुत ही it become very it become very hard, ठीक है, on drying, as well as जब पानी डालते हो it become very slippery also, right? So why that happens? Because due to different texture of soil. So soil also have its texture. Different soil have different texture, right? So texture क्या होता है बेसिकली, ये texture बनता कैसे है soil का? So students, जब soil formation होती है तो वहाँ पे different size of soil particles बनते हैं, right? So we have different size as well as different types of soil particle. So basically we have sand type of soil particle, ठीक है? Then we have silt as well as we have clay. And एक soil texture क्या होता है? Soil texture is basically the mixture of sand, silt and clay, or we can say amount of sand, silt and clay that is present in a soil that will give a soil a texture, ठीक है? एक किसी भी particular soil में किस proportion में sand, silt, clay present है, that is the soil texture, right? Any soil is not completely sandy, any soil is not completely clay, because in sand soil also there will be some amount of clay present, there will be some amount of silt present. In clay soils also there will be some amount of sand present, right? ऐसा नहीं होता है कि बस sand में तो sand ही type के soil particle present होंगे. The thing is that the proportion of sand will be more. Sand soil में the proportion of sand particle will be more. Clay particle will be very less, right? In clay soil, the proportion of clay particle will be high and sand particle will be less, right? So always soil texture refers to the composition of the soil in terms of amount of clay, silts and sand size particle. तो कितना amount में sand, silt और clay present है किसी particular soil में, that is called soil texture. Clear? I hope it is clear to you. So the primary particle of sand, silt, clay make up the inorganic solid phase of soil. So basically we have organic and inorganic phase of soil, means organic is basically the organic matter that is present in soil, but the inorganic part is basically your sand, silt and clay, and the sand, silt and clay particle are formed from weathering of rocks, right? अब किस टाइप की रॉक वेदर हुई है उस पर डिपेंड करेगा कौन सा सॉइल पार्टिकल बना है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अगेन just to make it into simple words, it is just basically soil texture is basically proportion of sand, silt and clay particle present in any particular soil. ठीक है? That proportion will give a texture to the soil. Like for say, when we say sandy soil, so sandy soil मतलब क्या होता है? In this
amount of sand will be more. Like for say, I'm not giving an exact percentage, but like here 80% sand particle will be there, only 10% silt particle will be there, or 10 to 12% silt particle will be there, or 8 to 10% we can say clay particles are present, right? So you can see more of sandy particles are present, that's why it is called sandy soil. Clear? Similarly, clay mein 80% clay particle will be there, only 10% sandy particle will be there, so that soil will be called as clayey soil. So basically किसी भी soil में कितना amount of sand, silt and clay present है, उस basis पे soil का texture define होता है, ठीक है? So I hope now it's clear to you what is soil texture. Also students, see these particles have been divided based on the size, ठीक है? बहुत important है. In your examination question can come from here also, right? Based on the soil particle we have soil size, soil particle size basically. ये different types बने गए हैं, sand, silt and clay. So if any soil particle has diameter of 2 to 0.02 mm, it will be of sand category. If any have 0.02 to 0.002 mm, it will be of silt category. And if any soil particle is of less than 0.002 mm diameter, then that will be your clay particle. ठीक है? तो size पे भी depend करता है, and also the mineral from which it is formed, right? देखो होता क्या है कि when weathering happens, a particular type of mineral will form a particular type of soil particle, right? So sand किसी एक पर्टिकुलर टाइप के मिनरल से बनता है, क्ले किसी एक पर्टिकुलर टाइप के मिनरल से बनता है, अगेन सिल्ट किसी एक पर्टिकुलर टाइप के मिनरल से बनता है, राइट? और तो मिनरल और उसके साइज पे डिपेंड करता है कि उसका टेक्सचर क्या होगा, सॉइल पार्टिकल का टेक्सचर क्या है, राइट? सॉइल का टेक्सचर क्या है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ सैंड, क्ले और सिल्ट कितना प्रेजेंट है. क्लियर? चलो, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, राइट? जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है वो किस चीज पे डिपेंड करती है when we understand the sand, silt and clay. ठीक है? So when we talk about water holding capacity, very important, ठीक है? Water holding capacity is low in sandy soil, right? Now why it is very low in sandy soil? क्योंकि sand soil में क्या है, बड़े बड़े पार्टिकल्स है, राइट? वी हैव अंडरस्टूड कि सैंडी सॉइल का जो सॉइल पार्टिकल है वो थोड़ा सा बड़ा है, राइट, कंपेयर टू सिल्ट एंड क्ले. So when we have bigger size of soil particle, what we'll have? We will have more macropores. Okay, coming to porosity again. So there are two types of pores that are present, macro and micropores. Macropores are bigger in size, ठीक है? They do not hold water for longer duration of time. Micropores are smaller in size and they hold water for longer duration of time, and this water is which is actually available to the plant, right? If you can recall, I have already discussed soil water potential with you, right? So there we have discussed different type of soil water as well, right? तो यहाँ पे micropores में जो पानी होगा वो पानी एक्चुअली में प्रेजेंट होगा क्रॉप्स के लिए, राइट? जो मैक्रोपोर्स में पानी प्रेजेंट होगा दैट वाटर विल ड्रेन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर? नाउ इन योर सैंडी सॉइल मोर ऑफ मैक्रो पोर्स आर प्रेजेंट, ठीक है? ज्यादा बड़े साइज के पोर्स प्रेजेंट है क्योंकि साइज जो है पार्टिकल का वो बड़ा है, राइट? सो पोर साइज विल बी मोर ऑफ मैक्रो टाइप. सो व्हाट विल हैपन? The macropore will drain faster. Micropores कम है, so there will be less water for crop. So hence water holding capacity is low for your sand soil. Clear? If I talk about silt, so in silt medium to high level of water retention capacity is seen. Again, due to size of particle, there will be macropores as well as micropores, right? So and highest water holding capacity is seen in clay, because again soil particle is small, there will be more of micropores, less of macropores. So if more micropores are present, then more water holding capacity is there, right? So ये आपने याद रखना है. Sand has low water holding capacity, silt has medium and clay has high water holding capacity. Now if I talk about aeration, so again see, it will be good in sand soil due to more of macropores. Aeration will be more, right? Because there will be more space for air to enter due to presence of more of bigger size pore, right?
It will be medium for silt for the same reason, and it will be poor in clay. So aeration will be poor in clay because there are less macropores while we have more micropores in clay. Clear? Then if I talk about drainage rate, it will be high in sand. Obviously the macropores drain faster, so drainage will be high in your sand soil, medium in your silt, and it will be very slow in your clay soil. Talking about suitability for tillage after rain, so basically students, tillage which is done in soil, right? So if after rain or if after irrigation you do tillage in sandy soil, it will be easy to till sandy soil, right? Because they do not have property of sticking with each other, right? The sands do not stick with each other. So you can do tillage after rain or after irrigating the field easily in your sand soil. But in your clay soil, the soil is very sticky and they form bigger size clot. So you cannot easily till the soil after irrigation or after rain in your clay soil. ठीक है, hence these soil are called heavy soil. ठीक है, clay soil को heavy soil भी बोला जाता है क्योंकि टिलेज ऑपरेशन के टाइम पे इट्स नॉट इजी, बिकॉज क्या होती है, ये स्टिकी होती है, द सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड स्टिक टू द टिलेज इम्प्लीमेंट, सो इट्स नॉट वेरी इजी टू टिल clay soil after irrigation or rain, but it's easier in your sand and silt. So that's why it is called light soil. ठीक है, it's called light soil. Sand is called light soil and clay is called heavy soil. ठीक है. So basically light soil and heavy soil किस basis पे किया जाता है? Differentiate based on ease in tillage. कितना टिलेज में कितना easy हो रहा है किस soil को till करना. Sand में it is easy to till sand soil, so it is light soil. And clay soils are heavy because they are sticky, they stick to the tillage implement, as well as it's not easy to till them after irrigation or after rain, right? Now ability to store plant nutrient, so it is poor in sand. ठीक है, जो sand soil है, they do not have much ability to store nutrient, right, due to their chemical structure again. And in clay soil the nutrient holding capacity is more. ठीक है, so these are few properties of sand, silt and clay that you have to learn very well. ठीक है, अच्छे से याद करना है इसको. Then if I talk about soil structure, next property of soil, so we have different types of soil structure. So first we have is a platy soil structure. Platy में क्या होता है, basically soil का जो structure है, it's like plate, it's plate like structure, right? यहाँ पे horizontal dimension is more than vertical dimension. ठीक है, this is called platy soil. Then we have prismatic soil. In case of prismatic soil, we have more of vertical dimension, okay, and edges are very sharply cut. ठीक है, that's why it's called prismatic structure. ठीक है, so we can see that vertical dimension is more than horizontal dimension. Then we have blocky. In case of blocky, right, we have almost equal vertical and horizontal dimension, making a block like structure. This is called blocky structure of soil. ठीक है, then we have spheroidal, or it is also called granular. Granular में we have spherical like structure of soil. ठीक है, and for agriculture purpose spheroidal or granular structure is considered more suitable because there will be more space between these granular soil structure, right? So spheroidal or granular will be considered more suitable for agriculture purpose. Again, a question that can be asked in your examination. Clear? So this is another property which is soil structure. Soil का structure कैसा है? Platy है, prismatic है, blocky है, spherical है. ठीक है, तो agriculture के लिए spheroidal और granular is considered good, right? Now next let's talk about bulk density of soil. So students, bulk density क्या होती है? Basically it is the dry weight of soil when dry weight of soil is divided by volume. ठीक है, now why we are calculating the bulk density? Basically to understand how much soil is compacted. Okay, so कितनी soil compacted है हमारी, उसके लिए we calculate the bulk density. So if bulk density is high, then soil is considered to be more compacted. Soil बहुत compacted होती है अगर bulk density हमारी बहुत ज़्यादा होती है. इससे क्या पता चलता है कि basically देखो bulk density क्या है, dry weight upon volume. तो अगर dry weight ज़्यादा है, ठीक है, dry weight ज़्यादा है, that means soil particles are very close to each other. There is less pore space and more of the soil particle is present, right? And bulk density अगर ज़्यादा आती है तो इससे पता चलता है कि हमारी जो soil है बहुत ज़्यादा compacted है, right? So lower bulk density shows that pore space
पोर स्पेस ज्यादा है, लोअर बल्क डेंसिटी के केस में, बट अगर हायर बल्क डेंसिटी है तो पोर स्पेस लेस होगा। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू, बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी, कॉम्पैक्शन ज्यादा होगा, पोर स्पेस कम होगा। और अगर बल्क डेंसिटी कम है तो कॉम्पैक्शन कम होगा और पोर स्पेस ज्यादा होगा। क्लियर? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, फॉर डिफरेंट सॉइल बल्क डेंसिटी जो आइडियल होनी चाहिए, सैंडी सॉइल में इट शुड बी लेस देन 1.6, फॉर सिल्टी इट शुड बी लेस देन 1.4 एंड फॉर क्ले इट शुड बी लेस देन 1.1। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सिर्फ याद रखना है कि जो बल्क डेंसिटी है, इफ इट इज मोर देन देयर विल बी मोर कॉम्पैक्शन। ठीक है, मोर कॉम्पैक्शन और एंड लेस पोर स्पेस। ठीक है, फॉर्मूले से भी समझ लेते हैं। बल्क डेंसिटी क्या है? ड्राई वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ड्राई वेट ज्यादा कब होगा? जब ज्यादा सॉइल पार्टिकल होंगे, राइट? आपने एक पर्टिकुलर कंटेनर लिया, उसमें आपने सॉइल निकाली किसी पर्टिकुलर फील्ड से, राइट? उसमें उस सॉइल का ड्राई वेट ज्यादा कब होगा? जब ज्यादा पार्टिकल होंगे उसमें, राइट? और सिमिलरली अगर लेस पार्टिकल होंगे, ज्यादा पोर स्पेस होगा, तो ड्राई वेट कम होगा। तो दैट शोज अगर ड्राई वेट कम है तो कॉम्पैक्शन कम है, बल्क डेंसिटी कम आएगी। अगर ड्राई वेट ज्यादा है, कॉम्पैक्शन ज्यादा है, बल्क डेंसिटी आपकी ज्यादा। ठीक है, सो ये बेसिकली कॉम्पैक्शन को स्टडी करने के लिए ये प्रॉपर्टी है सॉइल की कि हाउ मच सॉइल इज कॉम्पैक्टेड। और बल्क डेंसिटी, इट इज ऑलवेज सेड दैट बल्क डेंसिटी शुड बी लेस एंड ये जो आपके डेटा है कि इतनी अराउंड होनी, लेस देन इतना होना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, सो अगेन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टू अंडरस्टैंड कॉम्पैक्शन व्हाट इज कैलकुलेटेड, बल्क डेंसिटी इज कैलकुलेटेड। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर कॉम्पैक्शन है तो बल्क डेंसिटी बढ़ी हो, अगर कॉम्पैक्शन है सॉइल में ज़्यादा तो बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगी, कम होगी तो बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यू शुड हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट। ठीक है, बल्क डेंसिटी हम क्यों कैलकुलेट करते हैं और कैसे ये ज़्यादा और कम है। क्लियर? ओके, और ये पोर स्पेस पे भी कैसे डिपेंड करती है। क्वेश्चन बन सकता है कि अगर बल्क डेंसिटी ज़्यादा है तो पोर स्पेस ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो पोर स्पेस वहाँ पे कम होगा। क्लियर? और जब अगर बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगी तो दैट इज़ नॉट डिजायरेबल फॉर क्रॉप ग्रोथ। क्यों? क्योंकि अगेन बल्क डेंसिटी ज़्यादा मतलब पोर स्पेस कम है, क्रॉप का जो रूट ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, सो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यू हैव टू handle them accordingly. Then we have particle density. Now students, bulk density में हम pore space भी देखते हैं, dry weight को भी consider करते हैं, but particle density में हम सिर्फ और सिर्फ जो soil particle है उसकी density निकालते हैं। ठीक है, we are not considering pore space here, we are just considering the density of soil particle per unit volume। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी pore space का addition नहीं करते हैं, we are just concerned about कि in weight of individual soil particle per unit volume कितना है, that is particle density। ठीक है, and usually the average value of particle density is 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी इज नोन एज रियल डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे अब हमने रियल जो सॉइल पार्टिकल है उसकी डेंसिटी कैलकुलेट की है। क्लियर? सो आई होप इट्स क्लियर। पार्टिकल डेंसिटी क्या है? रियल डेंसिटी। It is known as real density. It is the actual density of soil particle which is calculated. I hope now it's clear, right? So particle density clear है. Now students, one more thing you have to understand. We have sand soil, silt soil and clay type of soil, right? There is one more type of soil which is known as loamy soil. So students, basically you might have seen जो हमारी soil textural classes होती हैं, जो total सॉइल टाइप की क्लासेस हैं हमारे पास, वो 12 टेक्सचरल क्लासेस है। व्हाट आर दिस टेक्सचरल क्लासेस? बेसिकली बेस्ड ऑन कितना सैंड, सिल्ट और क्ले प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हमारे पास 12 सॉइल टेक्सचरल क्लासेस है, लाइक सैंडी सॉइल, क्लेई सैंड, लोमी सैंड, सिल्टी सैंड, लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल, राइट? इस तरीके से हमारे पास 12 टेक्सचरल क्लासेस है सॉइल की, राइट? अब इसमें एक क्लास होती है लोमी सॉइल और लोम सॉइल, राइट? अब ये लोमी सॉइल क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स? इस सॉइल में, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल में जो प्रपोर्शन है सैंड, सिल्ट और क्ले का वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स एग्जैक्टली इक्वल, बट या प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले का इक्वल रहता है। मैंने बताया अगर सैंड ज्यादा होगा तो वो सैंडी सॉइल है, क्ले ज्यादा होगा तो क्लेई सॉइल है, सिल्ट ज्यादा होगा तो सिल्टी सॉइल है। एक और क्लास होती है लोमी सॉइल, जहां पे प्रपोर्शन आपका सैंड, सिल्ट और क्ले का इक्वल रहता है। ठीक है,
तो ये एक चीज आपने याद रखनी है कि लोमी सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले का प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरी चीज यहाँ पे ये याद रखनी है, अगर हम पार्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं तो पार्टिकल डेंसिटी दो चीजों में डिपेंड करती है। एक है कि मिनरल, किस मिनरल से वो सॉइल पार्टिकल बना है, क्योंकि अभी हम सॉइल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक सॉइल पार्टिकल की डेंसिटी की बात हो रही है, राइट। तो अगर कोई मिनरल लाइट मिनरल से बना है, अगर कोई सॉइल पार्टिकल लाइक जो सैंड होता है, सैंड सॉइल पार्टिकल, वो एक लाइट मिनरल से बना है, क्वार्ट्ज से बनता है बेसिकली, तो वो क्या है, एक लाइट मिनरल है। तो उसकी डेंसिटी, अगर लाइट मिनरल से बनने वाला सॉइल पार्टिकल है, उसकी डेंसिटी ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि अगेन मिनरल जो इसको बना रहा है वो हल्का है, राइट। तो इसकी जो सैंड है उसकी जो पार्टिकल डेंसिटी है वो कम है। क्ले जो है वो हेवी मिनरल से बन रहा है, ठीक है। क्ले जो बनता है, क्ले पार्टिकल जो बनता है वो एक हेवी मिनरल से बनता है, तो उसकी पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में सैंड के पार्टिकल कम आएंगे, राइट। अगर हम इसी वॉल्यूम का, लाइक फॉर दिस इज पर्टिकुलर बॉक्स, इस बॉक्स में हमने सैंड पार्टिकल को वे किया, राइट। तो इसमें सैंड पार्टिकल कम होंगे क्योंकि सैंड पार्टिकल बड़े साइज के होते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया इसका कम होगा, राइट। अगर हम इसी में अगर हम क्ले पार्टिकल को वे करें तो क्ले पार्टिकल ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू सैंड पार्टिकल। क्यों? क्योंकि क्ले पार्टिकल आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड जो पर यूनिट वॉल्यूम एरिया होगा इन क्ले पार्टिकल का, और या वी कैन से कि जो क्ले पार्टिकल है उनके नंबर ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर इसमें 10 सैंड पार्टिकल आते हैं तो क्ले पार्टिकल 20 आएंगे, क्योंकि क्ले पार्टिकल छोटे होते हैं, सैंड पार्टिकल बड़े होते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी अगेन सेम चीज के लिए क्ले की ज्यादा होगी, सैंड की कम होगी। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, किस मिनरल से बना है और सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल, ठीक है। तो सरफेस एरिया कितना कवर कर रहा है, तो अगेन डेंसिटी कितने कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर उसमें सैंड कम होगा तो सैंड की डेंसिटी कम होगी, पार्टिकल डेंसिटी कम होगी, क्ले की ज्यादा होगी। और दूसरा रीजन है मिनरल, सैंड लाइट मिनरल से बनता है, क्ले हेवी मिनरल से बनता है, तो वेट क्ले का ज्यादा होगा, ठीक है। तो पार्टिकल डेंसिटी क्ले की ज्यादा होगी, सैंड की कम होगी। क्लियर? So I hope now you understood all these properties and all the important things that I have discussed. Now let's solve these questions. So question is, which of the following soil has highest water retention capacity? ठीक है, very easy. I have already told you. We have option silty, clayey, sandy. I have already discussed with you that highest water retention capacity किसकी है? clay की है, क्योंकि यहाँ पे micropores ज्यादा है। Clear? Next question, what is the name of proportion of soil occupied by air and water? Very important. ठीक है, option are given density, space, gap, porosity. Answer will be porosity. It is the proportion that is occupied by air and water. Soil porosity क्या है? जहाँ पे air और water occupied होता है, right? Soil में. Now next is, which soil have the appropriate amount of fine sand, silt, organic matter, moderate water retention capacity? ठीक है। Now students, again ये जो है, again the 12 textual classes that I was talking about and one textual classes where we have appropriate amount of sand, silt and clay. So this will be your loamy soil, ठीक है। loamy soil में आपका जो fine silt, sand और clay है वो appropriate amount में होता है। It will have moderate water retention capacity. क्यों? Again sand की वजह से macropores भी होंगे, क्ले की वजह से माइक्रोपोर्स भी होंगे, तो जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो मॉडरेट होती है इसमें, इट्स नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप हैज लीस्ट पार्टिकल डेंसिटी? आई हैव डिस्कस विद यू, राइट। लीस्ट पार्टिकल डेंसिटी किस में होगी? आपकी सैंड में, कोर्स सैंड में, दैट इज ऑल्सो इन कोरस सैंड। सी सैंड भी दो टाइप की होती है, कोरस एंड फाइन। कोरस मतलब जो बहुत बड़े पार्टिकल है, फाइन मतलब फाइन सैंड पार्टिकल। अगेन मैंने बताया कि अगेन आपकी जो पार्टिकल डेंसिटी हो किस पे डिपेंड करती है, जितने बड़े पार्टिकल होंगे उतनी कम पार्टिकल डेंसिटी होगी, जितना फाइन पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा पार्टिकल डेंसिटी होगी, राइट। तो क्ले की सबसे ज्यादा पार्टिकल डेंसिटी है, ठीक है। देन कोरस सैंड इज मतलब जहाँ पे साइज है जो सैंड पार्टिकल का वो बहुत बड़ा है, तो सबसे कम पार्टिकल डेंसिटी होगी आपकी सैंड की। क्लियर? I hope now you understand all these important properties of soil. So that's all for my part of this ARD Simplified Series. So further lecture will be taken by Diksha ma'am. Thanks for watching these videos and thank you so much. I wish you all the best for your preparation.